Morning students, I hope you all are doing great at your places and you all are taking good care of your health, and today we'll be starting with a new poem, that is All the World's a Stage, right? सारे वर्ल्ड में जो चीजें हैं धीरे धीरे वो आती हैं. Basically definitely indicates the different stages of life. So let's just begin with this beautiful poem. The title of our chapter is all the world's a stage, right? So let's just read this poem about the different stages of life, कि कैसे हमारी लाइफ में different stages आती हैं, right? So all the world's is a stage. पूरा संसार क्या है, एक स्टेज है जहाँ पे men और women they merely players. We all are the players. We all like the puppets. They have their exits. They have their entrance. लोग पैदा होते हैं, लोग मरते हैं, एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट. और एक ही इंसान एक ही टाइम पे बहुत सारे पार्ट्स को प्ले करता है. He acts been at the 7 ages. We have 7 ages. At first the infant, पहले सबसे छोटा सा बच्चा होता है. Then mewling and puking in the nurse arms. नर्स के आर्म्स में ऐसे छोटा मोटा वो बहुत ही ज्यादा रोता है, बिलखता है. And the willing, then the winning school boy with his सैशल मीन्स वो अब स्कूल बॉय बन चुका है, स्कूल में आ गया है. शाइनिंग मॉर्निंग फेस, राइट, क्रीपिंग लाइक स्नेल, स्नेल की तरह फटाफट फुदकता है. अनविलिंग टू स्कूल, स्कूल नहीं जाना चाहता है. बट देन द लवर, और फिर एक लवर बनता है. साइंग लाइक अ फर्नेस विद अ वोफुल बाल, राइट, वोफुल बैलेड. बैलेड मीन्स बहुत ही ज्यादा, आप कह रहे हैं ना, जो चीजें नहीं करना चाहते हैं हमें वो भी करनी पड़ती है. मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो देन अ सोल्जर, और फिर एक ब्रेव इंसान बनता है. just full of strange oath and beard like the, and of course bearded like the part. फिर उसकी दाढ़ी आ जाती है. jealous in honor में sudden, quick in quarrel, कभी कभी लड़ाइयों में भी फंस जाता है. quarrel means to fight, right? seeking the bubbler reputation, bubble reputation, को reputation की बहुत चिंता होती है, right? even in the cannon's mouth, and then the justice, और फिर justice भी मांगता है. in fair round by belly with a good Caprian line. Caprian line means चुड़िया आ जाती है और थोड़ी सी पेट आगे आ जाता है. with the eyes severe and beard of formal cut, एक normal decent इंसान बनना चाहता है. एंड ऑफ कोर्स फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टांसेस, बिल्कुल वाइज रहना चाहता है. एंड सो ही प्ले हिज फास्ट एंड 6 एज. फिर वो कहाँ शिफ्ट हो जाती है, इनटू अ लीन एंड अ स्लिपर्ड पेंटलून, की बहुत ही पतली सी हो जाता है वो. फिर अब वो चश्मा लगाता है और पाउच ऑन हिज साइड, उसके हाथ साइड में पाउच होता है. उसकी यूथफुल अब जा चुकी है. एंड वेल सेव द वर्ल्ड टू वाइट, बहुत ही लंबा समय गुजारा है. और हिज श्रंक श्रैंक एंड हिज बिग मैनली वॉइस भी अब क्या हो जाती है, लो डाउन हो जाती है. टर्निंग अगेंस्ट वर्ड्स की चाइल्डहुड ट्रबल पाइप्स, बिकॉज जब हम बूढ़े हो जाते हैं वी आर सिमिलर टू द चाइल्ड, बिकॉज वी स्टार्ट we start involving our family members in ourselves, right? And whistles in the sound and last year हमारी life का that ends this stranger eventful history in our lives. And in the second childish and more oblivion means it's very obvious, like a childish stage. सेंस टीथ भी हमारे गिर जाते हैं, आंखें भी खराब हो जाती हैं, टेस्ट भी, और सब कुछ. written by William Shakespeare. He is one of the famous romantic poets in the literature, right? इनका बहुत ही ज्यादा फेमस प्ले है, that is Julius Caesar, right? About this poet, he was born in 1546 and 1616 में इनकी डेथ हो गई थी. He was and of course an English poet, playwright भी हैं, and of course एक actor भी हैं. He was born in Stratford upon Avon, Avon, April 1546, and is often regarded as the Bard of Avon, right? वाइडली बहुत ही ज्यादा रिगार्ड किया जाता है एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज. मैंने आपको पहले ही बता दिया है. इन्होंने 37 प्ले लिखे हैं अपनी शॉर्ट लाइफ टाइम में, रेंजिंग फ्रॉम कॉमेडी, ट्रेजेडी, एडवेंचर भी है और रोमांस भी, राइट? मूविंग ऑन टू दिस वर्ड मीनिंग, मूलिंग. फर्स्ट वर्ड इज मूलिंग, मीन्स मेकिंग अ क्राइंग साउंड, रोना छोटा छोटा जैसे बच्चे रोते हैं. प्यूकिंग इज ऑफ कोर्स स्पिटिंग और वॉमिटिंग, छोटे बच्चे करते हैं ये. विनिंग इज ऑफ कोर्स कंप्लेनिंग. सैशन इज ऑफ कोर्स अ बैग में लॉन्ग स्ट्रेप होता है, हम पहनते हैं अपने कंधे पे. बाल इज ऑफ कोर्स अ पोएम, राइट? ओथ इज promises. Pard over here is of course a leopard, and capon is of course a male chicken over here. Saws is of course the छोटे छोटे sentences जो आपको advice देते हैं. Pantaloon is of course an old man, जिस मतलब थोड़ी लूज लूज पैंटे पहनते हैं. Shoes means clothes for the leg
ऑफ अ लोअर लेग, मतलब नीचे वाले, जैसे जिसको हम बोलते हैं जब कभी कभी नीज पे दर्द हो जाती है तो वी यूज टू वियर दैट नी पैड, राइट। Shank is a part of a person's leg between and of course ankle. नी और एंकल के बीच में जो टाइम कह रहे हो, जो पार्ट होता है उसको हम शैंक बोलते हैं। ट्रेम्बल इज ऑफ कोर्स हाई पिच वॉइस एंड ऑब्वियस, ऑब्लिवियन इज ऑफ कोर्स ऑब्वियस, अ पर्सन हु इज अनअवेयर कि क्या हो रहा है उसके साथ, एंड सेंस मीन्स विदाउट, राइट। मूविंग ऑन टू दिस प्रैक्टिस टाइम, first we'll be completing with all the MCQs. In which act does a man feel jealous in honor? Of course, in the sixth one, right? Men's की जो act है, they are divided into how many stages? It is divided into 7 stages. What does the man turn again towards the childish treble? Of course, this one is the final. And who mules and pukes? Of course, it's the infant, right? According to the speaker, what is the world? World is just a stage, right? Moving on to this fill in the blanks, all the world stage पे हम सब लोग क्या हैं? Dash, that is all the men and women, we are merely the players, right? हम लोग क्या हैं? Players हैं, right? They have their exits, सबकी exits हैं and entrances हैं, right? And add one man, ये and है, it's not add, it's and. Make it a correction. Add one man in this time. In his time plays many parts. Moving on to this true and false. The meaning of the word part is of course a small chicken. Let me see it once again. Over here is part is of course a leopard. So this is absolutely false. Right? The moving of the stance is advised. This is absolutely false. इसका मतलब होता है without. Right? At last the infant's mewling and in this at last नहीं आएगा. This is absolutely false. Last में वो क्या बन जाते हैं? Old बन जाते हैं. Man acted, they are divided into 6 stages. No, divided into 7 stages, right? The man turn again towards the childish treble in the final stage. Yes, this one is true. Moving on to this question answers, please complete all these question answers at your own. And I hope you all understood this poem. It was a very moralistic poem where it teaches us that there are 7 stages in a human life where we have to go through all the stages of our lives and handles to solve all the challenges that came across in our life. You people also keep doing hard work for your exam and stay blessed. Thank you.